Hi guys, welcome back to another video, and today we'll be studying the second plant hormone, that is gibberellins. In the last video I have told you about auxins, and everything that you need to know about auxin is present in that video. So if you haven't watched it yet, just go and watch it and click the like button, and do not forget to share, and just subscribe to my channel, guys. So the next video I'll be telling you about gibberellins. So although these hormones are not related to each other, they're two different, they vary from each other, all the 5 of them. So if you need to focus on this first, then you can just watch this video for now. And now we'll be studying about gibberellins. So what are gibberellins? Gibberellins are a group of tetracyclic diterpenoid compounds which are made up of 4 isoprene units having end gibberellin structure, that is a ring structure. You can see here, this is a structure of gibberellin, that is GA. This is the word we are going to use, that is GA. This is short form of gibberellin and the types of gibberellins. So gibberellins are basically tetracyclic compounds, diterpenoid compounds. Tetracyclic means 4 ring structures are present. Alright. And a ring structure is determining that it is a type of gibberellins. Now the function of gibberellins is that it acts as a plant regulator and also helps in the following processes. First is stem elongation, that is the stem part को elongate करने में help करता है. Germination, seed germination, dormancy, flowering, sex expression, enzyme induction, leaf and fruit senescence. All these are the basic functions, and these all will be explained later on in the video in detail. So next we'll be talking about gibberellins. They were first discovered by Kurosawa in Japan, and in this course he was basically experimenting in his course of studies on fungal diseases of rice. So he found there is an abnormal growth promoted by the fungi, and it was due to a compound produced by Gibberellin fujikuroi. This was the name of a fungi. ठीक है, इसके बाद उसने इस पे डिस्कवरिंग स्टार्ट करी, and all the gibberellins are derived from end gibberellin skeleton. So gibberellins are classified on the basis of their structure and function. ठीक है, from plants, fungi and bacteria there are a total about 136 gibberellins which are identified, and they are named as GA1 and so on till n number of times. मतलब n मतलब कितना भी आगे जाएगा, बहुत सारे 136 varieties हैं, तो GA 136 आ जाएगा यहाँ पे n की जगह. 1 2 3 4 5 we all have to just name GA1. Still 165 till now there are about 136 gibberellins which are identified, and now they all have either 19 carbon atoms or 20 carbon atoms. But out of the 19 carbon atoms and 20 carbon atoms, जो 19 वाले होते हैं, they are more biologically active than the 20 carbon atoms. ठीक है, जिब्रेलिन्स की बात कर रहे हैं. दोनों में हमेशा हमने ये बोला है कि ये वेराइटीज तो 136 हमने बोली है, बट जो वेराइटीज होती हैं या तो उनके पास 19 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं या फिर वो 20 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं. तो अगर हम 19 कार्बन कंपाउंड वाले जिब्रेलिन की बात करते हैं, then it is more biologically active. Now carboxyl group at C7 is the feature of biologically active gibberellins. अब biologically inactive का obviously हमें पता चल जाएगा कि C7 पे अगर carboxyl group present नहीं है, then it is a inactive one, and if it is present, that is biologically active gibberellin. Now we'll be talking about biosynthesis and transport. Biosynthesis मतलब how is the gibberellin being synthesized? The synthesis takes place primarily in the apical tissues. Apical tissues are basically they're present at the meristem. Apical meristem, that is the tip of the plant. उन tissues में उसका synthesis होता है, and the young leaves. ठीक है, it's not sure that the root tissues also produce gibberellins or not. अभी तक it's not sure, but there are various researches which are going on. So till then you have only 2 options to write in the exam. The question comes that where is the synthesis taking place. You can write down either in the apical tissues or in the young leaves. So now large number of gibberellins are found in immature seeds and developing fruits. हमने बोला सिंथेसिस तो भी हमारी एपिकल टिश्यूज और यंग लीव्स में हो रही है, लेकिन वो मिलते कहाँ है, वो ट्रांसपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं इमेच्योर सीड्स में एंड डेवलपिंग फ्रूट्स में. Now gibberellins are synthesized by condensation of 4 isoprenoid subunits. ठीक है,
the basic isoprene unit is IPP, that is isopentenyl pyrophosphate. This is the most basic isoprene unit, जो किस में होती है, gibberellins में, क्योंकि all the gibberellins, as I've already told you, all the gibberellins are synthesized by the condensation of 4 isoprene units. That is, when 4 isoprenoid units come together, they lead to the formation of gibberellins. So now the basic isoprene unit which is leading to the formation of gibberellin is IPP, that is isopentenyl pyrophosphate. Now isopentenyl pyrophosphate condenses to produce 20 carbon geranyl pyrophosphate. ठीक है, अब इसमें बोला हमने सबसे पहले बताइए सबसे बेसिक आइसोप्रीन यूनिट जो हमारी यूज होती है जिब्रेलिन की फॉर्मेशन में, वो होती है आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट. लेकिन आफ्टर आइसोपेंटेनाइल कंडेंसेस, उसकी कंडेंसेशन के बाद इट प्रोड्यूसेस अ 20 कार्बन कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज GGPP, दैट इज geranyl pyrophosphate. Please guys, one thing you need to keep in mind, just memorize these names: germinal pyrophosphate, IPP, and which is the basic और कौन किससे सिंथेसाइज हो रहा है. ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है, बिकॉज इन द एग्जाम दे कैन ऑल्सो गिव यू क्वेश्चंस टू कंफ्यूज यू कि GGPP किससे सिंथेसाइज हो रहा है या IPP किससे सिंथेसाइज हो रहा है. तो यू नीड टू नो द बेसिक्स दैट IPP से GGPP सिंथेसाइज होता है, and this GGPP further acts as a biosynthetic precursor for gibberellins. ठीक है, अभी तक हमने बोला था कि बेसिक आइसोप्रीन यूनिट्स ये होता है, इसकी IPP होता है, IPP की कंडेंसेशन के बाद GGPP फॉर्म होता है, एंड इट फर्दर एक्ट्स एज अ बायोसिंथेटिक प्रीकर्सर फॉर गिबरेलिन्स. ठीक है, यू कैन ऑल्सो रेफर टू द स्ट्रक्चर हेयर. इससे हमें पता चल जाए, क्योंकि हमने जो भी कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करी है C7 पे, इससे हमें पता चल जाता है कि वो बायोलॉजिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, जितने भी फीचर्स हैं ये प्रेजेंट हैं, स्टेम एलोंगेशन एक्सेट्रा, ये सारा यू नीड टू कीप इन माइंड. ठीक है, और कितने होते हैं और किसने बनाया, कौन से फंगस से बना, और वो किस चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यू नीड टू रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग. दीज आर द I don't think you can get any other matter for this part, only except the diagram part. If you need to look at the better diagram, you can check over the internet, but obviously I'm providing you the filtered part, which is the most important one. Alright, it is being synthesized in the apical tissues or in the young leaves. ऑक्सिन के केस में भी यही होता था, सेम चीज. लेकिन अब हम आ रहे हैं आगे. ठीक है, अब बायोसिंथेटिक पाथवे, हमने बायोसिंथेसिस बता दी कि बायोसिंथेसिस यहाँ हो रही है ना. बायोसिंथेटिक पाथवे इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 stages: stage 1, stage 2 and stage 3. In stage 1, GGPP, that is geranyl pyrophosphate, is a 20 carbon linear molecule. It is converted into entcaurin in plastids. अब बायोसिंथेटिक पाथवे में हो रहा है कि हमारा जिब्रेलिन बन कैसे रहा है. हमने पहले बोला IPP, that is isopentenyl. Let's just recall it once again. All right, so IPP is isopentenyl pyrophosphate. It is the first isoprene, or the basic isoprene unit. After its condensation, it leads to the formation of 20 carbon geranyl pyrophosphate. And now GGPP, the first stage that we're talking about, this GGPP is converted into entcaurin in plastids. If you want, you can just, in the form of a flowchart, you can just write IPP, then arrow mark, then GGPP, then arrow mark, then entcaurin, साथ में bracket में लिख दो plastids में बन रहा है. You can just, that is easy to memorize. Okay. Now stage 2, now caurin आ गया, plastids में बन गया. अब caurin को हम क्या करते हैं, caurin is transported from the plastids to the endoplasmic reticulum. अब endoplasmic reticulum में जाते ही entcaurin is oxidized to GA2, that is gibberellin 12. In the first gibberellin in the biosynthetic pathway of all the plants, and it also has the precursor of other gibberellins. ठीक है, मतलब हमने बोला सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ हमारे साथ, हमारा GGPP is converted to entcaurin in plastids. Now, as soon as entcaurin is entering the plastid, it's also after then it enters into the endoplasmic reticulum. अब endoplasmic reticulum में अंदर आने के बाद entcaurin की oxidation हो जाती है to GA12, that is gibberellin 12, and it is the first gibberellin in the biosynthetic pathway of all the plants, and it is also the precursor of other gibberellins. Now the hydroxylation of
carbon 13 of Ga12 converts it into Ga53. That is, अब क्या होता है जब हमारा Ga12 बन गया, Ga12 को हमने बोला है कि जैसे Ga12 ऑक्सीडाइज जैसे एंट काउरीन Ga12 में ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो द प्रीकर्सर ऑफ अदर जिबरेलिन्स. अब क्या होता है जब Ga12 बन गया तो उसकी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है कार्बन 13 की. अब वो G12 इज कन्वर्टेड टू Ga53. ठीक है. नाउ स्टेज 3 में क्या होता है, साइटोसॉल में हमने बोला Ga12 and Ga53 दे हैव 20 कार्बन विच इज कन्वर्टेड टू अदर जिबरेलिन्स. ठीक है. और G9 कार्बन 9 arise from the oxidation elimination of C20 in the form of CO2. In cytosol, Ga12 and Ga53 give bioactive gibberellins Ga4 and Ga1. ठीक है. उसके बाद हमने बोला वेरियस केमिकल्स, हमने ऑक्सीजन में भी बताया था कि कुछ होते हैं जो ब्लॉक करते हैं उसका पाथवे, तो इसमें भी सेम है. इन जिबरेलिन्स के केस में देयर आर वेरियस केमिकल्स दैट ब्लॉक द सिंथेसिस एंड दीज केमिकल्स आर AMO1618, फॉस्फोन D एंड साइकोसेल CCC, that is, they inhibit the first stage of gibberellin biosynthesis. inhibit ही कर देते हैं, मतलब उसके synthesis को नहीं होने देते. Now translocation of gibberellin takes place by a phloem and xylem. दोनों हमारा स्टेलर सिस्टम होता है जिसकी वजह से हमारा ट्रांसलोकेशन होता है. एंड दिस ऑल्सो हैज अ डिटेल्ड वीडियो ट्रांसलोकेशन की. प्लीज जस्ट गो एंड वॉच इट एंड डू नॉट फॉरगेट whether you're watching if you're watching the full video, you're sharing it, just like the button so that it motivate me. And it is transported to the rest of the plant by a phloem. अनलाइक इन ऑक्सीजन में क्या होता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है. इसमें क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता. 3 टाइप का फ्लो होता है, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट बायोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट एंड everything, what are the basic features. Now I'll be telling you in detail what are the effects of gibberellins. Stem elongation, that is exogenous gibberellin promotes internodal elongation. अब क्या होता है, नोड्स के बीच में उसको हम बोलते हैं इंटरनोडल elongation. जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स जो होते हैं उसमें ये हेल्प करता है. ठीक है. इट्स एप्लीकेशन टू दीज ड्वार्फ प्लांट्स, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं ड्वार्फ प्लांट्स में तो उसमें क्या करता है, ये रिस्टोर कर देता है उनको नॉर्मल एंड टॉल फिनोटाइप. नॉर्मल बन जाते हैं बिल्कुल प्लांट्स जो ड्वार्फ वेराइटी होती है. ठीक है. इट ऑल्सो प्रमोट्स इंटरनोडल elongation इन स्टेम ऑफ रोसेट प्लांट्स, दैट इज स्पिनच एंड कैबेज. नेक्स्ट इज फ्लावरिंग एंड सेक्स डिटर्मिनेशन. ऑब्वियसली अब फ्लावरिंग में जिबरेलिन्स जो होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. कैसे होता है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग डे एंड बाइनियल स्पीशीज में बेसिकली ये हेल्प करते हैं इन फ्लावरिंग. एंड यूजुअली रोसेट प्लांट्स ऑब्वियसली डू नॉट फ्लावर इन रोसेट फॉर्म्स, बट जस्ट बिफोर फ्लावरिंग द प्लांट्स शो एक्सटेंसिव इंटरनोडल elongation एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बोल्टिंग. ठीक है. बोल्टिंग इज ट्रिगर्ड बाय एनवायरमेंटल सिग्नल्स, दैट इज लो टेम्परेचर एंड समटाइम्स फोटो पीरियड एज वेल. It also plays in the role of sex determination. For example, cucumber and spinach may promotes the formation of staminate flowers, that is with the help of stamens, but it suppresses the stamen development in case of maize. ठीक है. Now seed germination भी होता है इसका एक function. And seed germination में क्या होता है, it act by activating the vegetative growth of the embryo and also mobilizes the stored food reserves of the endosperm by promoting synthesis of a variety of hydrolytic enzymes. ठीक है. All this is done. Plant hormone second हो गया है, जिबरेलिन्स, ऑक्सीजन भी हो गया है. And if any doubts, I am always saying that again and again in my every video. Just comment down below. Any problem, mic issue, or anything that you don't understand, just comment down. I'll explain you in a better form. And do not forget to subscribe, guys. Subscribe करके जाना, like करके जाना, and share करना अपने friends के साथ, जिसके साथ भी तुम्हें लगता है it'll help them, it'll benefit them. Just share with them. Okay, bye.